common topic about childcare, which is how to stop your children from biting other children or other people. And it is a very embarrassing situation sometimes for parents when they find their child has bitten somebody, other some other child or somebody in the public, in presence of many people, and they feel very bad about it, about the child's behavior, and get embarrassed. So this is a thing which is commonly seen between children 1 to 3 years, and it is very difficult for parents to accept this behavior, and parents also sometimes don't know how to react to this situation. They sometimes scold children, they kind of become angry on the children, and sometimes they themselves go and like beat the children or scold them in a bad way. So that is to prevent this behavior from happening again. But all these behaviors actually don't help the parents in getting rid of this behavior in their child. So today I'm going to take a comprehensive approach in explaining as to why this behavior happens, why the children go and bite somebody, and what are the reasons behind this, and what to do in order to decrease this behavior in children and slowly get rid of all this behavior from your child. And actually, if somebody sometimes your child bites somebody, what to do then. So we'll come to all of this one by one. So first of all, why do the children bite someone? So these are the things which is developmentally kind of a progression in their development, from a child who was totally dependent on their parents to slowly a child who explores their surrounding and becomes independent. So there is a developmental phase between 1 to 3 years where children try to explore their surroundings, and they don't understand. So they don't understand that biting somebody actually causes pain for them, and it is a problematic situation. So what they do is they bite to explore sometimes as to what will happen if I bite. So kind of a cause effect relationship they are trying to establish. And sometimes it is naturally what happens is 1 to 3 years age they try to explore things in their surroundings. So everything they try to put into their mouth. So similar kind of behaviors happens here. They try to bite people to see what happens. So these things are there. And apart from that, teething happens between 1 to 3 years. So generally teething starts between 7 to 8 months of age, when teething teething is at its prime between 1 to 3 years. So teething causes some sensory pain and discomfort in the gums. So children try to grab onto things and bite things so that their discomfort will be relieved. So that is one more reason. Another reason which is there is sometimes children need attention. So they are seeking for attention, they want people to notice them. So they go and bite someone to just get attention out of other people. Apart from this, one more reason is the environmental reason. So environmental reason is like somebody some child has gone into a new home, or somebody new has come at home, like a new caretaker or a new baby has come at home, relatives have come at home. So the child feels stressed, and because of this stress they manifest this kind of behavior sometimes. So this is also very commonly seen. And another reason is to express themselves. If they have not learned the language, or they are still learning the language behavior, they kind of express by biting or doing all these things. So these are the things which actually happens in the background in the child's mind when they are biting other people. So now coming to the solutions as to what we can do to gradually get rid of this. So first of all, we should understand, if a child within 1 to 3 years is biting someone, that is not to cause pain. Child's intention is not to cause pain. Child doesn't know, his mind is not mature enough to understand that biting someone may be causing pain to somebody. So he is doing just to relieve his anxiety or explore things, or kind of a getting like a behavioral establishment. He's trying to do a relationship. तो ये क्या होता है कि लोग बच्चे अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए करते हैं। या कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनकी जो चीजें हैं किसी ने ले लिया, उनको पसंद नहीं आया, या किसी चीज से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हो गए, तो ऐसा करना चाहते हैं वो बच्चे उस टाइम पे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस बिहेवियर को कम करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सबसे पहला कारण जो समझ में आता है बच्चों को ये बाइटिंग करने का, दैट इज द टीथिंग। सो टीथिंग मतलब जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो दांत के एरिया में जो मसूड़ों में उनको एक हल्का सा दर्द जैसा और इचिंग जैसा रहता है, तो जिसके कारण वो चीजों को बाइट करते हैं।
तो इसको प्रिवेंट करने का जो तरीका है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो टीथर आता है। टीथर कुछ नहीं होता है, एक सॉफ्ट टॉयज होते हैं जो दांत में रख के उसको चबा सकते हैं बच्चे। तो वो तीतर मिलता है रेडीमेड, मार्केट में अवेलेबल है। आपके पीडियाट्रिशियन से भी पूछेंगे या फिर अमेजोन में जाके सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो तीतर सॉफ्ट टॉयज होते हैं, वो काफी अच्छे टॉयज होते हैं, उनको दांत में दबाने के लिए वो बने होते हैं। तो उससे वो उनको वो सेंसरी रिलीफ मिलेगा, जो दांत में उनको जो खुजली जैसे या दर्द जैसे होते हैं, तो उससे उसको आराम मिलेगा। दूसरी चीज है कि बच्चे को जब दांत निकलते हैं ना, तो उनको कोई चीज बाइट करने के लिए चाहिए होता है। तो तीतर के अलावा हम क्या करते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, ऐसा खाना जो वो दांत से बाइट कर सके, बाइट करके खा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में आप कुकुम्बर दे सकते हैं, कुकुम्बर मतलब खीरा दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, पियर्स दे सकते हैं, और भी जैसे कि बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं। तो ये जो फूड्स है ना, जिसको वो बाइट करके खुद खा सकते हैं, इससे बच्चों को दो फायदा होता है। एक तो उनको बाइटिंग करने का एक जो है उनका जो डिस्कम्फर्ट है वो रिलीव होता है। दूसरा उनको इंडिपेंडेंस आता है कि हाँ, मैं अपने से अपना खाना खाता हूँ। तो ये एक बच्चों को उस एज में एक अपना इंडिपेंडेंस, अपना एक एक्सप्लोरेशन करने का जो बिहेवियर होता है, वो भी उनको हेल्प करता है इसमें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये करने से बच्चों को बहुत आराम मिलता है। दूसरा चीज है कि बच्चों को एक्सप्रेशन सिखाएं। कभी क्या होता है, बच्चे के पास ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते, ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, तो वो इसी चीज से अपने को एक्सप्रेस करते रहते हैं, बाइट करते रहते हैं। तो उसको एक्सप्रेशन सिखाएं, जैसे कि उससे बातें करें, उनको बोले कि जैसे साइन से जे टाटा बाय बाय करना, फ्लाइंग किस देना, हग करना, बच्चों को आपस में हैंडशेक करना, ये सब चीजें सिखाएं। तो इनसे क्या होगा, उनको एक्सप्रेस करना आएगा, नो कहना, स्टॉप कहना। तो ये सब जब सिखाएंगे ना, तो बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में इजी रहता है। तो जब वो अपने आप को लैंग्वेज के मीडियम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ये बिहेवियर कम करेंगे। इसके अलावा और क्या होता है, बच्चों में जैसे बताया कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के कारण वो कभी कभी दूसरे बच्चों को बाइट करते हैं या फिर पेरेंट्स को बाइट करते हैं। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में क्या करना होता है कि उस टाइम पे जब बच्चे ने आप गलती की है ना, तो उस टाइम पे आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, जैसे हम टाइम आउट कहते हैं। बट बाद में बच्चे के साथ खेलो, बच्चे को आप कोई टॉयज दो, उससे बातें करो, उसको आपके साथ एक गेम खिलाओ, जैसे सिंपल बॉल गेम होता है, एक बॉल थ्रो करो उसको, या फिर कोई ड्राइंग सिखाओ, या फिर उसको थोड़ा म्यूजिक सिखाओ, कुछ भी उसको टाइम दो। जैसे कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, हाफ एन आवर, 1 आवर। पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों क्या आते हैं, बहुत टाइम पे क्या होता है, पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, और घर में कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है जो बच्चों को केयर करे। मेड या जो हो नैनी होती है, वो एक प्रोफेशनल की तरह करते हैं। बट जैसे दादा दादी या फिर बच्चों के जो आंट और अंकल होते हैं, वो जो जितना टाइम देते हैं और जितना अपनेपन के साथ करते हैं, वो चीज बाहर के लोग नहीं कर पाते। इसलिए पेरेंट्स को अपने शेड्यूल से, मैंने अपने ओपीडी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि बहुत टाइम पे पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं होता है। करियर में या जॉब में इतना कमिटमेंट है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, जो कि बच्चे को फिर बाद में इमोशनली डिप्राइव करता है, और बच्चे फिर ऐसे बिहेवियर्स मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कम से कम आधा से 1 घंटा टाइम एज ए पेरेंट इंडिविजुअली अपने बच्चे के साथ स्पेंड करो। उससे आपके बच्चे के न केवल ये बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होगा, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा मैच्योरिटी आएगा, उनको अपना इमोशनल कंट्रोल आएगा, उनको लव्ड फील होगा। बच्चों को क्या है, उनको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि मैं लव्ड हूं, मैं सिक्योर हूं। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, आप अगर टाइम स्पेंड करो। दूसरा है कि बच्चे को अपने को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है, उनको जिसको बोलते हैं मेक बिलीव गेम्स। जो जैसे कि आप कर सकते हो कि बच्चे को टॉयज दो, और टॉयज को उसका फ्रेंड की तरह उसको इंट्रोड्यूस करो कि ये टॉम है, अगर कैट लाए तो टॉम है, उसको एक्सप्रेस करो। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा अपने को एक्सप्रेस करने में इजी रहता है। उनको किट दो, जैसे एक डॉक्टर्स किट आता है या फिर कुकिंग किट आता है। तो ये सब जो चीज है, उनसे उनको गेम के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो इन चीजों को यूज करोगे तो बहुत बच्चे का डेवलपमेंट में सुधार आएगा, और धीरे धीरे बच्चा इन सब बिहेवियर से दूर चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है कि बच्चों को अगर मान लीजिए बच्चे ने किसी और बच्चे को बाइट किया, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात है, जब भी बच्चे ने किसी को बाइट किया, तो जिसको बाइट हुआ है, जिस बच्चे को बाइट किया गया, जो जिसको हर्ट हुआ है, पहले उसको अटेंशन दो, उससे बात करो, उसको कंसोल करो। उसके जो वुंड है उसको सोप वाटर से वॉश करो, अगर उसमें कहीं स्किन कट गया है तो उसको डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक दो। फिर जो बच्चे ने बाइट किया उसके ऊपर आप गुस्सा मत करो, उसको चिल्लाओ मत, या उसको डांटो मत, या उसको पनिश मत करो, उसको वहां से हटा दो थोड़ी देर के लिए।
फिर थोड़ी देर बाद उसको बोलो कि बेटा देखो ये आपने जो किया ना, टेल हिम दैट दिस बिहेवियर हैज कॉज हर्ट और पेन टू somebody and it is not good. So you should tell them in a very clear manner, because बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हमने बाइट किया तो सामने वाले को दर्द हुआ। तो उसको समझाना है, इस चीज को उनके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करना है कि ये चीज गलत है, बट गलत क्यों है ये भी समझाना है। गलत इसलिए है कि उससे आप दूसरे को हर्ट हुआ और उस हर्ट के कारण उनको तकलीफ हो रही है। तो इस चीज को समझाने से धीरे धीरे उनके दिमाग में इंप्रेशन आएगा कि ये गलत बिहेवियर है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ही आप जेंटली बच्चों को समझाओ, क्योंकि डांटने से या बच्चे को हर्ट करने से उसको फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आता है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि जब भी बच्चे ने बाइट किया उसके बाद आप ट्राई करो रिलेट करने के बच्चे के इसके पीछे क्या रीजंस थे। जैसे मैंने इतने सारे कॉजेस बताया ना, उस कॉज के हिसाब से आपको टीथिंग हो सकता है, इमोशनल उनको कोई एंजाइटी हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको रिलीव करने का ट्राई करो। तो इन चीजों से धीरे 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 बच्चों के अंदर ये बिहेवियर का सुधार होता है। और एक दिन में ये कभी नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 months 6 months it might take, but slowly child will understand this is a wrong behavior and they'll learn better. One more thing is, whenever the child bites somebody na, teach them alternate behavior, so make amends. So कैसे उसको सुधारा जाए, तो अगर मान लो किसी को बाइट किया तो उसको सॉरी सॉरी बोल सकते हैं, उसको हग कर सकते हैं, उसके वहां पर सहला सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको उनको मतलब मोटिवेट करना है कि नहीं ये आपने गलत किया तो इसका सुधार करो, करेक्शन बिहेवियर जिसको बोलते हैं। एक और चीज है इसमें, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को पनिश करना है। पनिश करने से क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, बट उसको समझाना है। और बाइट बैक कभी नहीं करना है। बच्चे ने किसी को बाइट किया फिर दूसरे बच्चे भी उसको बाइट करे तो ये फिर गलत बिहेवियर का एक सर्कल चलते रहता है, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, एंड आई विल स्टार्ट गोइंग विद द क्वेश्चंस नाउ। Is it okay if my child bites, should bite a child back? Will that help my child to stop biting? No. So that's what. So if somebody bites somebody, then don't allow your child to bite or the other child to bite, because that is actually, then they will think okay, biting is normal. That is totally wrong. You should explain. What parents should do or adults should do is, teachers or even the caregivers, explain them that this is causing pain and that is why it is not right. Rather you should learn to tell no. If you don't like anyone's behavior, tell no. So what happens is, children, when they have to share their toys or they are actually coming into each other's space and they are not like some child is brought up at home alone and he has not been exposed to other children, then he feels very stressed when another child comes and take his toy or take his space or cuddles his parents. So that time child kind of wants to make his own space or territory. So that's why he does. So slowly you just make the child realize that you how to adjust with others, how to play with others, how to make friends with others, how to behave with others, like I said, handshaking, kissing, hugging. Like kissing in the sense, you can do fly kissing, and tata bye bye, like this, hand gestures, speaking. So those things will make the child learn the behaviors. Doctor, I have actually stopped my child taking outside because of his biting habit. It is getting very difficult. So what you can try is, whenever you take your child out, give one toy to your child, so that he, whenever he is out, he'll be engaged with that toy. So make a toy which is very favorite of that your child. So like suppose you give a teddy bear or a cat, Tom. So you tell that this is your friend. So and they make believe play, you play with them. So what will happen is, this will make your child very comfortable. Even if he goes out, he will have something familiar with him. So whatever the stress, no, he can speak to that toy. So there's, children can go into this make believe play, that this Barbie doll or tomcat or a puppy. I am talking about soft toys, the cushion toys. So these toys will be their friends even if they go out. So if they have that toys, no, they have that sense of security or familiarity, or somebody is there with me. So they will think my friend is with me. So he will not go and latch on to other kids and do wrong behavior. So whenever you take your child, have some toys with your child. Till what age these habits will be and his teething will continue. So this habits usually beyond three years, it starts slowly getting better, because after 3 years children kind of have better control of their emotions, better way of expressing themselves. They can now talk better. So in first year they talk only one word, 2 years they can join two words to make a sentence, and by 3 years they can make a very
like clear instructions. So when they become 4 5 years now, they kind of they become mature to understand that this is a painful behavior, it is causing hurt to others. Second is they learn how to express themselves better, and they can tell what is they are feeling or what they don't like. And finally, at this age they have better self control, the brain also matures, so they have better self control. So that's why beyond 3 to 5 years it kind of gets less, and by 5 years it generally should stop. If it is not stopping beyond 5 years, then you should actually go to a therapist, child therapist, so who will guide the child in a better way. Any more questions? Day by day his teeth are getting sharper. If I don't allow my kid to do what he wants, his aggression be beyond limit until unless he bit. So this is what, so the teething thing I told, no, you have to give him a teether first of all. For if teeth is your problem, coming out teeth is a problem. Other thing is I told finger foods like cucumber, apple, these kind of boiled potato, eggs to eat. Then if he's becoming very naughty or aggressive if, against the things which he wants, and he's becoming very like something like tantrums he's throwing when he's wanting something and you're not giving, so that is really basically is the emotional control issue. Where and all what will happen is you need to use diversion technique. You divert your child with some other thing, some toy, some game, some skills like drawing, scribbling, or you buy one aquarium, try to engage the child with one aquarium. So what I have found is little out of the box is aquariums help to get the child to divert his attention, because a lot of fishes are there. You can always engage the child in some kind of activity, the fishes will be moving, so something you can do. So I actually keep always aquarium in my clinic to keep the children's attention diverted. Even when I give vaccinations, I give children focus on the aquarium, and I give vaccination. Children sometimes don't know, and they don't cry also, because most of the children during vaccination they cry because they see injection. The moment they don't see the injection, they won't cry, they won't feel the pain. So this is very important to divert the child's attention. You cannot always discipline the child by scolding them or giving back the pain to them. So children need diversion from a bad behavior, sometimes time out. What happens is children has done something wrong, ignore him for 5 minutes, so he will realize that this is not helping me. Because mostly what they do is they try to get attention, sympathy, all out of all this naughty behavior. So more and more you, so but you don't shout on them, don't scold them, don't hit them. Just tell them this is wrong and why it is wrong in a very calm, controlled manner, and realize that with time these behaviors and all definitely going to stop. No children continues to be like this forever. They will stop in 1 or 2 years. This is just a part of their development, part of them expressing themselves and learning how to behave. So once they learn this slowly, they will come out of it. Okay, so this, I think this is what you all wanted to know. So mainly the take home message is you have to identify what is the reason where your child is getting this behavior. It can be teething. So teething, I told the solution is give teethers, give finger foods which you can bite. Child can bite and eat. If the child is lacking in terms of expressing himself, then teach him expression behaviors, how to say no, how to say tata, how to say bye bye, how to say hello, all these things. You teach some behavior to the child. If the child is lacking like kind of seeking for attention, then play with the child, spend some time, half an hour, 1 hour every day, play some, get to the child's level, be a child with the child, and spend some time into the child's world. As a parent, you try to be in their world, try to be like a child, and spend, it will be you, for you also a very big stress buster. Rather than watching television or movies or using screen time, you use your time to play with your child, and you will also feel that your stress is relieved. You will also have a lot of fun, and child will also bond better, he will more listen to you much more. Because if you spend time, then you build that relationship, that it's like investment, it will give you big returns. Okay, so you spend your time with the child, those things will help. Another thing is try to give some toys and all, which is child will can manifest his own control over. So like he can tell that toy, he can make some commands on the toy, so like that he can be like little bit himself with the some other thing, but it is not the other child he can bite.
So these things slowly will take this behavior away. And one last message is, don't be too scared and don't be too aggressive on your child. These kind of behaviors are self resolving over a period of time. Every child outgrows these things. So it is just a time being that you have to be a little bit patient and a little bit like tactical about dealing with these issues. I hope this talk has helped you in understanding this issue. If you want to know more, you can always reach out to me on my website, drsandipgupta.in and babyhelp.in. These are the two websites I am always available on. If you have any queries, you can ask. I also have a YouTube channel, Baby Help YouTube channel, where you can ask your queries and see my other videos. Hopefully this video has helped you to understand this issue. Thank you for listening to me.